The river Tamsa, softly meandering through lush grassy banks, runs through our history and folklore, casting a spell as it flows. Many a soul has been vitalized, finding peace in the rhythm of its singing waters. Lord Ram and his consort Sita, the sage Valmiki, and Guru Nanak Dev, among others, have legends associated with the river. A few hundred years ago, a group of potters came here from Gujarat and settled in Nizamabad by the banks of the river Tamsa. Nizamabad is a small town situated about 100 kilometers north of Varanasi in the district of Azamgarh. On entering Nizamabad, the pottery is hard to miss. Blocks of clay, potter's wheels, and stacks of clay vases are everywhere. The small community of Kumhars, the traditional potters, combine utility with the magic of decoration, unique in its lustrous black color, incised with floral bands. The process of making pottery of this amazing beauty is both long and arduous. Deft fingers work skillfully to transform the humble clay into an object of luxurious vanity. The mitti, clay, is taken from nearby ponds and beaten to a fine powder, adding water as required. लेकिन मिट्टी की समस्या बहुत ज़्यादा है। मिट्टी यहाँ पर मिल रही है तो बहुत कंकड़ है सारी, उसके साथ बहुत मेहनत करना पड़ता है। उसको पानी में डालकर पहले भिगोना पड़ता है, फिर उसको झन्ना होता है। जिस तरह रेती झाड़ी जाती है उस तरह उसको मिट्टी को भी झाड़ते हैं, तो कंकड़ छोटे छोटे निकलते, तब उसको सुखवाते हैं, तब उसको थोड़ा टाइट हो जाता है तो तब माल उसको बनाते हैं। An estimated quantity of prepared clay is placed on the wheel and turned beautifully by the potter, achieving the desired shape with finesse. The Nizamabad pottery is characterized by strong curvilinear contours. Though simple and ancient, the shapes bring out myriad nuances and differences in each of its various forms, whether decorative or utilitarian. हमारा नाम कृष्ण मोहन प्रजापति है और मैं ये काम जो है सन 80 से शुरू किया हूँ। अपने माता पिता से सीखा ब्लैक पॉटरी जो है, उस समय जो है ब्लैक पॉटरी का नाम था और आज तो नाम डूब रहा है और हम लोगों की रोजी रोटी जो है बाहर नहीं जा पाता। इसी आम तो ज़िले के अंदर ही हम लोग जो है बना के अपना दुकान लगा के, या प्रदर्शनी मिलती कभी काल तो उसमें जो है जाके दुकान लगा के बेचते हैं, तो यही सामान बिकता है। The turning is carried out next day when the clay has set, using a selection of locally made metal tools and burnishing the surfaces with an agate pebble before the potter removes it from the wheel. बाहर में चले जाएं, जैसे अहमदाबाद हुआ, गुजरात हुआ, बॉम्बे हुआ, तभी वहाँ 500-600 डेली हम लोग को मिल सकता है। लेकिन अपना काम अपना होता है, दूसरे का काम दूसरा होता है। अब जैसे हम एक कारीगर हैं, आप लोग आ गए, देख रहे हैं कि बहुत अच्छा काम है। आप
स्वयं बनाते हुए, भट्टी लगाते हुए सब कुछ देखा। आपके समझ में आ रहा है कि ये इस काम में इतना मेहनत है, तो उस हिसाब से इनको पैसा मिले तो ये खुश रहेंगे। The dried pots are dipped in kabiz, a liquid clay slip prepared by grinding mango tree bark, bamboo leaves among other things, all of which carbonize during the firing. The slip is applied by dipping and pouring. The turned and polished product is then dried in the shade. After drying, mustard oil is applied and the surface is polished with a soft cloth in order to maintain an unblemished, shiny surface. The polishing of the terracotta wares before firing is what gives the end product a sheen finish. The designs are etched on the polished pots freehand using a pointed needle, sometimes using traditional geometric designs and sometimes floral. अभी इसकी एक कहावत है जो है, एक कम बढ़े दुक्कम लोहार, केचो पेचो लगे कुम्हार। इसका मतलब है कि इस काम को एकदम जो छोटे बड़े लोग सभी लोग मिल करते हैं, सभी का अपना अपना एक इसमें योगदान होता है। जैसे आदमी लोग अक्सर के चक्के पर काम करते हैं, औरतें जो है सफाई वगैरह जो है, बच्चे भी यहाँ वहाँ करते हैं, मिट्टी लाना भिगोना, ये सब जो है भट्टी लगवाना, जो तमाम तरह के इसमें मतलब मेरा कहने का मतलब जैसे बढ़े लोग जो है एक आदमी काम करते हैं, लोहार लोगों का दो आदमी का काम है, लेकिन एक कुम्हार एक ऐसी चीज़ इसमें जो छोटे बड़े सभी लोगों का बराबर का योगदान होता है। अभी जो है बिजली का चाक बन गया है जो है, तो यहाँ पर बिजली भी बहुत पर्याप्त नहीं आती है। 10 बजे से 5 बजे आती है, उसमें बीच में कटता है जो है। तो इसके लिए भी एक नियम के अनुसार यहाँ अगर बिजली मिले तो उससे भी मतलब इस काम को विकास मिलेगा, ताकि एक समय से काम करने को तो बन जाएगी जो है समय जो है। नहीं तो काफ़ी लोग होते हैं रात में बिजली आती है, रात में काम करते हैं, जिससे उनके स्वास्थ्य पर दिक्कतें आ रही है जो है। ये सब तमाम तरह की चीज़ें हैं जो है। Firing is done in a closed clay kiln by placing dung cakes between the wares and covering the heap with straw and ash. The lid is fitted onto the chamber and a mixture of ash, dung and water is smeared around the seam to seal it. This allows a smoky atmosphere to be created inside the kiln, which gives the pottery its black hue. During the firing, some dried goat dung is thrown into the kiln to enhance the blackening. The kiln is opened the following day and the highly polished black pots carefully unpacked. Women play a major role in creating the pottery. The slip making, slip application, polishing and inlay work is carried out solely by women. The women of Nizamabad exhibit their multi-hued talents in a variety of fields: basket making, hand embroidery, and of course, the culinary arts. A mixture of lead, zinc and mercury is pressed into the engraved lines with the thumb to create the sparkling silver motifs. The lead and zinc are brought from the market and beaten into thin strips resembling tin foil. Equal portions are pounded into powder
mixed with a few drops of mercury on the palm of the hand. The silver grey etchings contrast with the black background, making the piece truly a work of art. With Intach's design intervention, new forms and patterns have been created. The beauty of this pottery lies in the love that the artisan puts into it. It is obvious that he enjoys the work enormously. Intach's special intervention has introduced terracotta tiles to the existing repertoire of the Nizamabad pottery. The tiles can be used for cladding a whole wall or used just as accent pieces. The use of terracotta tiles adds to the insulation properties of the wall, making the room both comfortable and aesthetic. The black pottery of Nizamabad is a wonderful amalgamation of concept, design, and execution.